नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश खबर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे बड़ी खबरों के साथ। बाजार की बात सबसे पहले। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार की 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा दिया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। आज बाजार में क्या एक्शन रहा, किन शेयरों में दिखी तेजी, किन शेयरों में रही गिरावट, पूरा अपडेट लेकर मौजूद है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, देखिए इस हफ्ते के अगर आप वीकली रिटर्न्स की भी बात करें या फिर इनफैक्ट आज की मार्केट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहली पार्ट में आपको लग रहा था, फर्स्ट हाफ में आपको लग रहा था एक शॉर्ट कवरिंग अबाउट था, रिकवरी थी। लेकिन जिस तरह से 12 बजे के बाद हमने देखा कि मार्केट थोड़ी सी लैकलस्टर होनी शुरू हुई और एंड ऑफ द डे पर तो ये यहाँ पर वीकनेस के साइंस के साथ मार्केट बंद हुई। 17,200 एक बड़ा सपोर्ट बताया जा रहा था और उसके नीचे यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दिया। बैंकिंग स्टॉक से पूरी तरह आज प्रेशर बनाकर रखा। इनफैक्ट आप अगर लूजर्स की बात करें, जिन सेक्टर से सबसे ज्यादा ड्रैग किया नीचे बाजार को, उसमें से पीएसयू बैंक, मेटल्स और फार्मा स्पेस थे। अगर आप वीकली रिटर्न्स की यहाँ बात करें तो पूरे हफ्ते में लगभग 0.25% निफ्टी वीक हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से भी इतनी ही वीकनेस आई है। आईटी पैक ने 5.5% का वीकली नेगेटिव रिटर्न दिया। तो सबसे ज्यादा इस पूरे हफ्ते में जो वीक काउंटर्स थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा बाजार को नीचे की तरफ खींचा, तो उसमें एचडीएफसी बैंक काउंटर्स थे, ट्विंस थे और साथ ही आईटी पैक था। रिलायंस ने एक बहुत अच्छा सहारा पूरे हफ्ते बाजार को दिया, लेकिन आज रिलायंस की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं था। लैकलस्टर आज आपको थोड़ी मार्केट्स दिखी और क्योंकि हम वीकेंड के पास है, ओवरनाइट कैरी करने का बहुत बड़ा रिस्क है। और जैसे ही एक यूएस मार्केट से एक हैंगओवर था, ग्लोबल मार्केट से एक नेगेटिव बायस के साथ जब हम शुरू हुए, तो आज दिन भर आपको जो काउंटर्स जिन पर बात करनी होगी कि कहां से आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने को मिली, तो उसमें गेनर्स जो थे वो ऑटो पैक से थे। आप सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 3 दिन की अगर आप ऑटो पैक की परफॉर्मेंस देखें, आप पूरे हफ्ते की निफ्टी ऑटो पैक की परफॉर्मेंस देखें, तो ये सेक्टर था जिसने हाईएस्ट गेन्स दिए। लगभग इस पूरे हफ्ते में निफ्टी ऑटो काउंटर ने लगभग 3.25% का रिटर्न दिया। एनर्जी काउंटर सेकंड हाईएस्ट गेनिंग काउंटर सेक्टर स्पेस रहा इस पूरे हफ्ते में। चाहे मारुति की बात हो, एमएनएम की बात करें या फिर ऑटो एंसिलरी काउंटर्स की बात करें, ये क्लोजिंग के वक्त भी स्ट्रेंथ के साथ ही बंद हुए हैं। आप गेनर्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मारुति, एमएनएम, एशियन पेंट्स बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इन क्रूड, ब्रिटानिया, एयरटेल, ये काउंटर्स गेनिंग का साइड पर दिखे और लूजिंग साइड पर आपको काउंटर्स लाइक हिंडाल्को, सिप्ला, एसबीआई देखने को मिले। एफएनओ में भी अगर आप बात करें तो वहाँ पर, क्योंकि हमने इस हफ्ते में बात भी की थी कि खाने पीने कूलर्स जितने भी हैं, चाहे समा कूलर्स हों या फिर कूलर्स लिटरली वाइट गुड्स की बात हो, वो वाले स्पेस से, यानी अल्कोहल, लिकर, ये सारे काउंटर्स और वाइट गुड स्पेस, जो भी गर्मी से रिलेटेड काउंटर होंगे, पावर स्पेस से रिलेटेड काउंटर होंगे, वहाँ पर आपको एक बायसनेस पॉजिटिव दिखाई देगी। और इसी तरह से एफएनओ में भी आप टॉप काउंटर देखेंगे तो यूबीएल था। माइंडट्री ने एक बाउट दिखा है, पॉजिटिव बायसनेस कल भी थी और आज भी शॉर्ट कवरिंग का एक सेशन देखने को मिला। और इसके अलावा काउंटर्स लाइक अदानी पोर्ट्स, जहाँ पर एक्विजिशन की न्यूज़ के बाद क्लियरली एक पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला। तो मार्केट थोड़े वीक नोट पे क्लोज हुई है। 17,200 एक बड़ा सपोर्ट की बात की जा रही थी और उसके नीचे बाजार बंद हुआ है और बैंकिंग स्टॉक्स ने तो सुबह से ही प्रेशर बनाया हुआ था। अदानी पोर्ट्स ने भारत की सबसे बड़ी मरीन सर्विसेज कंपनी ओशन स्पार्कल को खरीद लिया है। इस डील की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बताइए। अगर देखा जाए तो 100% एक्विजिशन होगा। स्टेक का 1530 करोड़ रुपए का जो है ओवरऑल कंसिडरेशन है और ये ट्रांजैक्शन क्लोज हुआ है FY23 के EV EBITDA मल्टीपल का ऑलमोस्ट 5.7 टाइम्स पे। वैल्यू एक्रेटिव है और इसके अलावा एंटरप्राइज वैल्यू भी इसका जो है लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1700 करोड़ का है और कैश रिजर्व आपके 300 करोड़ के हैं। अब ये कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो एंड टू एंड मरीन सर्विसेज होती है, ड्रेजिंग की होती है, कि सारे जो मरीन रिलेटेड काम होते हैं ये कंपनी करती है। अगर ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया इनके पोर्ट्स, मतलब 13 से लेकर 15 पोर्ट्स तक इंडिया में एक्सपोजर है। और एक्सपोजर के अलावा अगर आप देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ओमान और ये सब जैसे कंट्रीज़ में भी जो है इनकी एक्सपोजर है। अब इनके लॉन्ग टर्म, लंबे अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत सारे हैं। लगभग 40% कस्टमर्स जो हैं आपके सॉवरेन इक्विवेलेंट के हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिनर्जीज़ क्या है, क्या बेनिफिट होगी अदानी पोर्ट्स को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके आय और एबिटा दोनों जो है 2 गुना बढ़ सकते हैं। और FY27 के लिए जो उनकी आर्म है अदानी हार्बर सर्विस, उन्होंने ये स्टेक खरीदी है। दूसरा हो सकता है कि जो लो कॉस्ट लीजिंग मॉडल है उससे बेनिफिट पड़ सकता है कंपनी को और वो जो है दुनिया भर में उसको जो यूज़ कर सकते हैं अदानी पोर्ट्स। और जब हम दुनिया भर की बात करें, इसका मतलब है कि जो अभी एक्विजिशन के कारण, क्योंकि
ओशन स्पार्कल्स का अब्रॉड में फुटप्रिंट है, तो वहाँ पे भी जो है वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और मार्जिन्स में भी जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। और रिसेंट एक्विजिशंस भी बता देते, 3 अहम एक्विजिशंस भी हुए हैं और पश्चिम बंगाल में मार्च में ताजपुर पोर्ट के जो है बिडिंग उन्होंने जो है ऑलरेडी कर दी है और पिछले साल देखा जाए तो 2 बड़े एक्विजिशंस देखे गए हैं। नायका शॉपिंग के मूड में है। नायका पर्सनल केयर ब्रांड अर्थ रिदम में 18.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके अलावा वेलनेस कंपनी नज वेलनेस में भी 60% हिस्सेदारी खरीदने की योजना है। यह हिस्सेदारी आगे बढ़कर 100% हो जाएगी। बोर्ड ने इन खरीदारियों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा KICA ब्रांड का भी नायका अधिग्रहण करेगी। फर्टिलाइजर शेयरों में आज काफी एक्शन देखने को मिला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने को लेकर जल्द ऐलान हो सकता है। फर्टिलाइजर के ग्लोबल प्राइस में तेजी की वजह से सरकार जल्द ये फैसला ले सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी मेघना मित्तल हमारे साथ जुड़ रही है। मेघना, बताइए। जी बिल्कुल, हम ग्लोबली देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र प्राइसेस काफ़ी समय से बढ़े हुए हैं। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर के बहुत ही पहले से फर्टिलाइज़र प्राइसेस बढ़े हुए हैं। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट को फर्टिलाइज़र सब्सिडी का अमाउंट इंक्रीज़ करना पड़ा था। तो जो अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यूरिया फर्टिलाइज़र सब्सिडी का जो बजटेड अमाउंट है इस साल का लगभग 67,000 करोड़ रुपीज़, वो बढ़ाकर 1.20 लाख करोड़ करने का प्रपोजल है, जो कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में आ सकता है। इसके अलावा जो PNK फर्टिलाइजर्स हैं उनकी सब्सिडी का अमाउंट इस साल का ₹42,000 करोड़ है, जो कि खरीफ सीज़न का लगभग ₹21,000 करोड़ होता है, जिसको बढ़ाकर खरीफ सीज़न को के अमाउंट को बढ़ाकर ₹60,000 करोड़ करने की बात चल रही है, जिसका कैबिनेट नोट तैयार है और इस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर डिवीजन द्वारा, क्योंकि उनको ये पूरा बढ़ा हुआ अमाउंट अकोमोडेट करना पड़ेगा। ये कैबिनेट नोट आने वाले हफ्ते में ही आ सकता है और अप्रूवल के लिए डिस्कस हो सकता है, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो याद रखिए, जो पूरे साल का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का अमाउंट है 1.09 लाख करोड़, वो बढ़कर ₹2.46 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कि दुगने से भी ज़्यादा है। तो ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। ये याद रखिए कि यूरिया का जो MRP जो फार्मर्स को रिसीव होता है वो ₹266 पर बैग है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उस MRP को फार्मर्स के लिए उतना ही रखा जाए, जिसकी वजह से यूरिया सब्सिडी का अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। PNK फर्टिलाइजर्स का भी इसलिए बिल बहुत ज़्यादा, जो सब्सिडी का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा इस साल का। तो PNK और यूरिया दोनों की फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो प्रपोजल है वो लगभग तैयार है। जो कैबिनेट नोट है PNK फर्टिलाइजर्स का, वो इस हफ्ते आने की उम्मीद है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ये फर्टिलाइजर प्राइसेस ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो ये कब तक बढ़े रहते हैं ये देखना बाकी है। पर गवर्नमेंट एक्सचेकर का जो सब्सिडी का अमाउंट है वो अकोमोडेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बढ़ा हुआ। बिल्कुल। और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल चल रही है, इसका पूरा अपडेट लेकर मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विश्व मोहन, बताइए, कहां सबसे ज्यादा एक्शन है आज, क्रूड में या गोल्ड में? सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्शन कच्चे तेल में है, जहाँ पर 2% के आसपास की गिरावट दिख रही है। ब्रेंट $106 तक फिसल गया है और चीन से मांग घटने की चिंता यहाँ पर हावी हो रही है। इसके अलावा जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई तेज़ी से बढ़ गए हैं और सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरों में तेज़ बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं, तो उसका यहाँ पर असर हो रहा है। IMF के अलावा कई बड़े ग्लोबल बैंक्स ने महंगाई को लेकर चिंता जताई है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता जताई है। उसका असर डेफिनेटली आगे दिखेगा और उस वजह से लग रहा है कि मांग आगे कम रह सकती है। उसका असर आज कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सोने और चांदी पर भी दबाव है। जिस तरह से फेड ने सामने से कहा, फेड के कई बड़े अधिकारियों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि मई की बैठक में आधे % तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है और बॉन्ड यील्ड उस खबर से लगातार तेजी दिखा रहा है, करीब करीब 3 साल की ऊंचाई पर है, डॉलर 2 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। तो ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो गोल्ड पर दबाव बना रहे हैं। चांदी में आज हालांकि बिकवाली और भी ज़्यादा है। MCX चांदी की अगर बात करें तो 700 से 800 रुपये की गिरावट यहाँ पर भी दिख रही है। तो एक जो निगेटिव माहौल यहाँ पर दिख रहा है, एक वॉर प्रीमियम जो गोल्ड और सिल्वर में चल रहा है, वो भी निवेशकों को लग रहा है कि जिस दिन सीज फायर की स्थिति आएगी तो वॉर प्रीमियम भी खत्म होगा। तो इस वजह से यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर पर आज दबाव है और क्रूड में भी नरमी देखने को मिल रही है। शुक्रिया विश्व मोहन।
अब बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ की, जहां पर खबर आ रही है कि आईपीओ पर इन्वेस्टर्स की राय लेने के बाद अब इसका साइज घटाया जा सकता है। और डिटेल के साथ मेरी सहयोगी मेघना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेघना, बताइए क्या डिटेल्स हैं एलआईसी आईपीओ को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, एलआईसी आईपीओ के आने से पहले ही उसके रोल आउट करने में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ये याद रखिए कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं, डिसरप्टिव अनसर्टेनिटीज़ हैं, जिनकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमारे सूत्र अब ये बता रहे हैं कि डीआरएचपी में जो मिनिमम 5% स्टेक सेल डिसाइड हुआ था एलआईसी के लिए, उसको अब लोअर किया जा सकता है 50% तक। 50% तक कट हो सकता है एलआईसी के क्वांटम स्टेक सेल में, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। सूत्र भी बता रहे हैं कि दीपम ने ये डिसाइड करा है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट को देखते हुए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए ये कट किया जाएगा। लेकिन ये भी तय है कि एलआईसी का आईपीओ मई 12 के पहले आ जाएगा, ये डिसाइड किया है दीपम ने। नेक्स्ट वीक आरएचपी फाइल होने की उम्मीद है। डिस्कशन सेबी से चल रहा है कि क्या एग्जैक्ट क्वांटम स्टेक सेल होना चाहिए, और इसके चलते जो मनी कलेक्ट होगी दीपम के द्वारा, वो भी उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक 50 से 60 हजार करोड़ रुपए तक दीपम मान के चल रही थी, जो कि अब स्टेक सेल कम होने की वजह से उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो क्वांटम स्टेक सेल है वो दो बातों को ध्यान में रख के किया जाएगा, कि एलआईसी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए और एलआईसी को एक न्यूबी कंपनी की तरह नहीं देखते हुए, एक मैच्योर कंपनी की तरह देखते हुए, जो उसके एशियन पीयर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये स्टेक सेल डिसाइड किया जाएगा। तो ये देखना बाकी है कि क्या वैल्यूएशन डिसाइड होता है एलआईसी का जब आरएचपी फाइल होगा नेक्स्ट वीक। इस साल जुलाई से नए लेबर कानून लागू हो सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने राज्यों से जून तक 4 नए लेबर कोड्स पर नियमों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से कई राज्यों ने इस प्रक्रिया को ढीला कर दिया था, पर अब इस पर फिर से काम शुरू हो गया है। और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार ने नए लेबर कानूनों को देश भर में लागू करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत फिर से कर दी है। दरअसल 5 राज्यों में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसकी वजह से जो नियम बनाने की प्रक्रिया थी उसमें रुकावट देखने को मिली थी, क्योंकि नियम बनाने की जो प्रक्रिया है उसको राज्यों को ही अंतिम रूप देना है, लेकिन विधानसभा चुनावों की वजह से उसमें प्रगति नहीं हो पाई थी। अब जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि अगले 2 महीने में जो नियम बनाने की प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप दिया जाए, और सरकार जो है जुलाई से पूरे देश भर में इसको लागू करना चाहती है। जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है, उसके हिसाब से करीब 22 राज्यों ने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है इन कानूनों के ऊपर, और 8 राज्य जो हैं वो अभी अलग अलग चरण में हैं। मसलन अभी कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने पुराने कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड्स जो हैं वो तैयार किए हैं, और इसे संसद की मंजूरी भी मिल चुकी है, जो कि है वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। लेकिन अभी तक इस पर नियम बनाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो सकी है, और इसमें कई तरह के अहम प्रावधान किए गए हैं। और जब अगर ये प्रावधान लागू होते हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो कर्मचारियों पर होगा, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीके हैं उसमें भी कई तरह के अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। फ्यूचर ग्रुप के लेंडर्स ने रिलायंस रिटेल डील को खारिज कर दिया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अंकुर, क्या वजह रही इस पूरे डील को खारिज करने की? जी हाँ, फ्यूचर ग्रुप के जो लेंडर्स हैं उन्होंने रिलायंस रिटेल वेंचर्स के साथ जो डील अनाउंस हुई थी वो फिलहाल उस पर वोटिंग में उसके लिए मना कर दिया है, मतलब उसको नकार दिया है। हमारी जो सूत्रों के मुताबिक 3 बड़े बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने इस डील के खिलाफ वोटिंग की है। आपको याद होगा NCLT ने बोला था कि आप क्रेडिटर्स की और शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकते हैं, ऐसा फ्यूचर रिटेल को ऑर्डर दिया था, और उसके बाद वेंसडे और थर्सडे को ये मीटिंग्स बुलाई गई। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो वोटिंग है वो इस डील के अगेंस्ट हुई है। अब ये वोटिंग अगेंस्ट क्यों हुई, तो जो लेंडर्स हमें रीजंस गिना रहे हैं उसके हिसाब से एक तो वैल्यूएशंस का मैटर है कि जो 2020 में डील की गई थी, अब रिलायंस से शायद उतना वैल्यूएशंस नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उनको अपने पेमेंट्स की भी कंसर्न है। साथ ही साथ कुछ जो स्टोर्स थे जहाँ पर रिलायंस का अधिग्रहण हुआ था उसको लेके भी लेंडर्स नाखुश हैं।
अब देखना ये होगा कि बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने ऑलरेडी एक पिटिशन डाली हुई है एनसीएलटी में कि जो इंसॉल्वेंसी कार्रवाई है वो फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ की जाए, क्योंकि जो बकाया है वो अभी तक लेंडर्स को मिला नहीं है। लगता अब यही है कि इस मामले का समाधान जो होगा वो अब कोर्ट्स में ही होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुर उस अपडेट के लिए। आज वर्ल्ड अर्थ डे है और इस मौके पर फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने एक बड़ा ऐलान किया है। जोमैटो ने कहा है कि अब वो 100% प्लास्टिक न्यूट्रल डिलीवरीज करेगा, जिसके लिए जोमैटो ने अगले 3 सालों के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा के प्लास्टिक न्यूट्रल पैकेजिंग के ऑर्डर देने का टारगेट सेट किया है। इसके साथ उन्होंने साफ किया है कि इस साल 2030 तक जोमैटो डिलीवरी के लिए 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगेगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार ने स्कूलों को लेकर नई एसओपी जारी की है, जिसमें सरकार ने स्कूल बिना बंद किए इस महामारी से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए नई गाइडलाइंस तैयार की हैं। क्या है स्कूलों और बच्चों के लिए नए नियम, ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, दिल्ली सरकार ने आज स्कूल्स के लिए एसओपीज़ को जारी कर दिया है और रिसेंटली जो डीडीएमए की मीटिंग खत्म हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि स्कूल्स को बंद नहीं किया जाएगा और सरकार एसओपीज़ को लेकर आएगी और सरकार ने एसओपीज़ को निकाल दिया है। तो इन एसओपीज़ के मुताबिक स्कूल्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर हाइजीन स्टैंडर्ड्स पूरे स्कूल में मेंटेन्ड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, टीचर्स और स्टाफ किसी को भी थर्मल स्क्रीनिंग के बिना स्कूल्स के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बुक शेयरिंग और जहाँ तक लंच शेयरिंग की बात आती है वो भी नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार ने स्कूल्स को ये डायरेक्शन भी दी है कि सरकार को वैक्सीनेशन को पुश करना है, पर्टिकुलरली उस एज ग्रुप में जिसके लिए एलिजिबिलिटी है एक कोविड जैब के लिए। इसके अलावा क्राउड किसी तरह का गैदर ना हो, चाहे एंट्री के टाइम हो चाहे एग्जिट के टाइम हो। सरकार ने आदेश दिया है स्कूलों को कि उनको क्राउड बिल्कुल भी गैदर नहीं होने देना है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार ने डिटेल्ड एसओपी निकाल दी है ताकि स्कूल्स जो हैं वो नॉर्मली फंक्शन करे जा सकें और स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल भी यहाँ पर ना हो। शुक्रिया उस पूरे अपडेट के लिए। भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मिलकर काम कर रहे हैं और जल्द ये हकीकत बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से हुई द्विपक्षीय बातचीत के बाद संयुक्त बयान में ये बात कही है। भारत दौरे पर आए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। अपने संयुक्त बयान में बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते मजबूत हुए हैं। मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट में हमने तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। कि हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। We've agreed a new and expanded defence and security partnership, a decades-long commitment that will not only forge tighter bonds between us, but support your goal, Narendra, of Make in India. The UK is creating an India-specific open general export licence, reducing bureaucracy and slashing delivery times for defence procurement. We've agreed to work together to meet new threats across land, sea, air, space and cyber, including partnering on new fighter jet technology, maritime technologies to detect and respond to threats in the oceans. We're extending our partnership as science superpowers and building on the collaboration between
Oxford AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, me. I have the Indian jab in my arms, and a power of good it did me. So many thanks to India. And that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। लालू यादव को जमानत चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ निकालने के मामले में जमानत मिली है। आपको बता दें कि 27 साल के बाद इसी साल फरवरी में इस मामले में फैसला आया था। चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में लालू यादव को पहले ही सजा मिल चुकी है। इन सभी मामलों में जमानत पर चल रहे हैं। लालू यादव को जमानत मिलने पर उनके बेटे तेज प्रताप ने खुशी जाहिर करते हुए इसे परिवार और पार्टी के लिए खुशी का मौका बताया है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है, ऐसे में नवाब मलिक को जमानत नहीं दी जा सकती। नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। नवाब मलिक ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से जमानत याचिका रद्द होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और मुंबई में चल रहे इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि उन्होंने सरकार से पहले और दूसरे डोज के बीच के अंतर को कम करने की सिफारिश की है। साथ ही बूस्टर डोज में भी तेजी लाने की पहल करने को कहा है। We have got 200 million doses of stock. We shut down production in December. I've even offered to give free donations to whoever wants to take it. The problem is, because, we've now sold enough vaccines last year, so it's not a commercial point. People want to travel. And if you've taken a shot, with this 9-month gap, if you work backwards, it's August, the month of August, August, September last year. So if you've taken the vaccine after that period, you can't travel. So that's one of the major reasons why we have proposed, because I get a lot of inquiries that, when can we have the booster? We need to travel. And so that was one of the reasons. And of course, globally, it's seen that after 6 months, the antibody levels go down. So why wait for 9 months? So there is a lot of scientific rationale for it. A lot of the experts in India have also agreed with that. And I think very soon the government will reduce the gap from 9 to 6 months, which is the right decision going forward for boosters as well. Well, we've been requesting the government since December to allow boosters in our country. Globally, if you look at, what's happening, everyone's taking boosters. Having said that, our vaccines made in India have worked very well. India's cases, hospitalizations, they're so much better, or rather lower, compared to Europe and the United States, which have been taking the messenger RNA vaccines and other vaccines. So even if you look at China, what's happening. So we're in a good position because of the vaccines that the Indian government chose to use in our program. Having said that, how many lives could we still prevent, from how many hospitalizations we could prevent going forward in future waves is dependent on the boosters and the level of boosters our country takes. We won't need 4 and 5 boosters like others have done, but I think in the urban areas and for the vulnerable, I think boosters is very important. We're already a bit late on it, but we still have time before the next waves come. Our nation now boasts of 60,000 startups and 81 unicorns, making it the 3rd largest startup ecosystem in the world. 2022 has also started with a bang, with about 1 unicorn being added every week. The startup world has never seen such accelerations. These implications are yet to be factored into India's growth rate
and job creation capabilities. In less than 5 years, we will be creating millions of opportunity for people with the appetite to skill and reskill themselves. Our domination of the digital economy will be the ultimate manifestations of a Bharat Par Nirbhar movement. Fourth and finally, the need for sustainability and a renewable power is yet another game changer for India. Solar power today is globally the fastest growing source of energy. Over the past decade, the price of solar panels has dropped by 90%. And over the next decade, we will continue to see price drops of the same magnitude within the solar ecosystems. The fact is that the marginal cost of solar power is headed to zero. The ability of this almost zero-cost electron to economically split a water molecule and create 100% green hydrogen in the future is a certainty. For India, the combination of solar and wind power coupled with the green hydrogen opens up unprecedented possibilities. All this enable decentralized generation and decentralized distributions, which will be transformative, especially for our rural populations. Decentralized power gives us the option to accelerate the micro-sizing of everything in a massive increments. Work together so that we can be more self-reliant together, so we have trusted partners. And that's why I think the relationship that you ask Rahul about, why is the relationship now going forward to a new level? I think on green growth, I think on defense and security, and on the whole trade agenda, there's a huge amount to do together. Well, as you said, a big point of convergence is democracy, and you invited India to the G7, reaffirming faith in the vitality of her open polity, Prime Minister. But of late, some, including MPs in Britain, have questioned the quality of India's democracy. They've sort of spoken from the pulpit, if you may. What do you make of this? I don't think it's the job of I mean, parliamentarians say all sorts of things, and you should see what they say about me. So look, in our parliament, I don't think that it's the job of one country to preach to another. India is an incredible country. It's 1.35 billion people, the biggest democracy in the world, and nobody can say that India is not a democracy. It's an extraordinary place, and above all, it is ever more important in a world where the growth of the future is going to be in the Indo-Pacific. That's where it's all happening. That's why the UK is tilting towards the Indo-Pacific. So India's role as a guardian of democratic values in that area is even more important. And that's why we want to develop our friendship and our partnership. And as I say, there are these three big areas. What's the problem the world faces right now? It's the cost of energy, isn't it? It's the price spike in fuel. Well, the UK and India are working together to deliver green energy solutions. I think what Narendra Modi has done, what Prime Minister Modi has done on solar energy is fantastic. We want to work together on hydrogen, on wind power. I think we're doing a memorandum of understanding today on
on wind power. So I have a vision of the UK and India collaborating on something like wind power from the Celtic Sea to the Bay of Bengal, wherever the winds blow most mightily here in India. So that is part of the agenda, but then there's also the whole defence and security side, and here again I think there's a lot more that we can do together. That's before you even get to trade, where I would like to see a free trade deal done by Diwali. Are there any impediments to that? Where are we with the contours of this trade deal? Well, there are some traditional areas where India maintains tariffs, and I'm not going to belabor them. No. But we're seeing progress. British apples, I'm told. The bar has been lifted. I don't know why there was a bar, but the bar has been lifted on British apples. And I'm proud to say that under this government, we're taking advantage of our new freedoms to have a much more proactive policy on welcoming talent to the UK from India. I'm absolutely thrilled to say we now have 99,000 Indian students in the UK. How about that? So it was, the numbers were right down. They've soared up again, and that's great for us. And we want to do more. We want to do more on services. We want to do more on agriculture, on food. Drink. There's a huge amount we can do together. Well, Prime Minister, won't a new FTA necessarily cover the liberalization of the visa regime with respect to Indian and UK citizens? Yeah, and we're short of people who we need in our economy, and I think I'm right in saying that, when I was Mayor of London, I came out here and I saw how the software for our Transport for London tube trains was being done in Bangalore. We need people who can help in the IT systems. We need Indian genius in the UK. I have a very open approach to this, but there's a huge amount of work to do. All I would say to our negotiators is get a move on. We want to get it done by Diwali. That's an interesting timeline. India has taken an independent stand, and I'm circling back to the Ukraine issue. Yes. On Ukraine, putting her at odds with the US and the UK. Does that bother you? It doesn't, because I like you, I know the history, and nobody can underestimate the importance of that and the relationship that there has been. But on the other hand, as I have said, India has come out and said some strong stuff. Yes, I would make the case, and I say it again, I think Putin has blundered catastrophically in what he has done. And I think that, if anything, it is going to make Russia a kind of satrapy of China. And I think that will be a long-term issue for us all to think about. But the big picture is that in a world where autocracies can do unsettling things, you need to have ever greater collaboration, partnership, and friendship between the democracies. And so that's why it was so important that Prime Minister Modi was at the G7, and that's why this partnership and the 2030 roadmap that we have for the UK and India is so important. And we're going to make sure, I hope that as a result of my conversations today and all the work that we've done in the last few weeks and months, that this will be the beginning of a really serious body of work between our teams and the teams here in Delhi. Well, India is a blue chip democracy, as some people, including you, enthusiastic about, but you've talked about autocracies in the world facing problems from them. Which in specific? Well, I don't think you need to. There are two big ones, and they occupy most of the Asian Eurasian landmass, and those. Russia and China, and so I think that we need to
we need to look at the positives that we can build on together. I think there are some anxieties, I think there are a lot of risks, but there's also an opportunity for a huge amount of collaboration. And this is and that's why I think there's something new and dynamic in the partnership. And I think that when you look at what's happening here in India today, you can see a country that is being, rebuilt in a very, very exciting way. And I think as I say, I think the Make in India agenda is a good one. We have some similar ideas in the UK, but we want to work together in a partnership. Last two questions, and I know I'm being prompted. Yeah, they're trying to get us to shut up. I can see they're getting increasingly antsy. Well, last two questions. One more, Rahul. Come on. Yes, okay. China's territorial ambitions pose a challenge especially to India, and you're well aware of it, and you're a long way from home forming the AUKUS. Yes. Do you condemn the Chinese incursions and their behavior? Look, we always condemn breaches of territorial integrity. That's why I condemn so strongly what happened in Ukraine. And I think we need to learn the lessons about how autocracies behave. I think that you mentioned AUKUS. AUKUS is an example of the way the UK wants to work together with friends and partners in the Indo-Pacific. But I stress, it is not an exclusionary thing. We want to work ever more intensively with India. Well, there's also the Quad. My last question. There's also the Quad. And snuck that one in. Yes. Are these alliances a durable counterfoil to China's expansionism in the Indo-Pacific, or do you see one working at the cost of the other? No, I think they work together. And fundamentally, they're about ideas, and they're about values, and they're about what type of future do you want? Do you want an open, pluralistic future where your kids can achieve their ambitions without a state bossing and bullying them and imprisoning them without a trial? Do you want a proper functioning democracy in your country? And the answer is everywhere and always that when you have freedom and when you have democracy, in the end, over the long term, you will have greater success and greater prosperity. And that is the message that we've got to keep driving home. Thank you very much. Thank you very much. It's been a pleasure. Thank you very much. Thank you. Thank you. Our nation now boasts of 60,000 startups and 81 unicorns, making it the third largest startup ecosystem in the world. 2022 has also started with a bang, with about one unicorn being added every week. The startup world has never seen such accelerations. These implications are yet to be factored into India's growth rate and job creation capabilities. In less than 5 years, we will be creating millions of opportunities for people with the appetite to skill and reskill themselves. Our domination of the digital economy will be the ultimate manifestations of a Bharat Par Nirbhar movement. Fourth and finally, the need for sustainability and a renewable power is yet another game changer for India. Solar power today is globally the fastest growing source of energy. Over the past decade, the price of solar panels has dropped by 90%.
And over the next decade, we will continue to see price drops of the same magnitude within the solar ecosystems. The fact is that the marginal cost of solar power is headed to zero. The ability of this almost zero-cost electron to economically split a water molecule and create 100% green hydrogen in the future is a certainty. For India, the combination of solar and wind power coupled with the green hydrogen opens up unprecedented possibilities. All this enable decentralized generation and decentralized distributions, which will be transformative, especially for our rural populations. Decentralized power gives us the option to accelerate the micro-sizing of everything in a massive increments. It enables micro-manufacturing, micro-agriculture, micro-water, micro-healthcare, micro-banking, micro-education, everything that India's rural populations needs it. Also, has hydrogen and its derivatives replace significant amounts of our imports of crude oil, natural gas and coal. I would go as far as to state that the revolutions in an alternative energy technologies opens up the possibility that someday India can become a net green energy exporter. The world's third largest recipient of FDI, thereby showcasing the world's confidence in India. While I have taken this opportunity to express my considerable optimisms about India's growth potentials, I recognize that there are challenges to address. These broadly include healthcare, education, skill development, manufacturing share of the GDP, and infrastructure availability. However, it is my firm belief that we will address most of these challenges in the decades ahead as we implement the many far-reaching government policies. Our economy gets bigger and stronger, and the positive impact of digitization starts being felt in every single one of these areas. For now, I see India as a landscape of endless possibility, spread over decades, impacting the lives of billions. Dear friends, let me end by explaining what I had said at the start of my talk. Uplifting the lives of 1.4 billion people may feel like a marathon in a short run, but it is a sprint in the long run. We are approximately 10,000 days away from the year 2050.
Over this period, I anticipate India will add about $25 trillion to its economy. This translates to an addition of $2.5 billion to our GDP every day until 2050. Over this period, I also anticipate India will add about $40 trillion to its stock market capitalizations. This translates to an addition of $4 billion to the market every day until 2050. Over this period, India will have eliminated all forms of poverty from our country. Stunning as these numbers are, we have a real shot of making this happen in just 10,000 days. 10,000 days over which we would have built a far more Atmanirbhar India, a far more Bharat par Nirbhar India, and a far more muscular India, providing a dignified life for all of its citizens. Dear friend, this is what democratic dividend must be all about, and my personal convictions about India's democratic dividend has never been higher. As our minister has said,